믿음을 가진 사람과 믿음을 안 가진 사람의 차이는 똑같은 걸 똑같은 환경에서 보더라도 전혀 다르게 볼 수가 있는 것입니다. The difference between those who have faith and those who don't have faith, even though they look at the same thing, they can see it very differently. 그래서 이번 시간에 우리가 믿음을 통하여 예수 그리스도의 마음을 우리가 받게 된다면 So through the word, if we receive the heart of Jesus Christ, 예수님이 없는 우리의 눈으로 보는 것하고 예수님으로 눈으로 보는 것 전혀 차이가 있을 것입니다. there will be difference in seeing the things without the eyes of Jesus and seeing things with the eyes of Jesus. 그래서 예수님의 마음을 받는 것이 바로 믿음의 삶이라고 이야기할 수 있겠습니다. And receiving the heart of Jesus, that is the life of faith. 여러분 안녕하십니까? 믿음의 삶을 통해서 하나님께 영광 돌리는 시간입니다. नमस्ते सभी को ये विश्वास के जीवन के जरिए परमेश्वर को महिमा देने का समय है। 우리가 예수 그리스도의 보혈로 구속함을 얻고 यीशु मसीह के लहू के जरिए हम छुड़ाए गए थे 이제 성령이 우리 안에 모시는 삶을 사는 동안에 और जब पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर है 우리가 하나님 앞에 얼마나 놀라운 인간인 것을 우리가 발견할 수 있는 복된 시간이 मैं 이번 सोचता हूँ 시간이 कि 될 ये 것 समय 같습니다. बहुत ही आखिर का होगा कि इस बात का आविष्कार करने के लिए कि हम परमेश्वर के सामने कितने अद्भुत 저는 हैं। 이번 시간에 우리 인간이 어떤 눈으로 바라보느냐에 따라서 전혀 다르게 보일 수 있다고 말씀드리고 और मैं आपसे 싶습니다. कहना चाहता हूँ कि हम चीज़ों को किस तरीके से देखते हैं उस पर निर्भर करते हुए हर चीज़ को अलग अलग तरीके से 이제 देख 가령 सकते हैं। 예를 들어서 모세가 가나안 땅을 12 지파의 종족들을 가나안 땅에 보내는 일이 있었습니다. और एक ऐसा समय था कि कनान के देश में मूसा ने 12 भेदियों को भेजा था। 자, 12명이 똑같은 시간에 똑같은 장소에서 똑같이 40일 동안 보고 모세와 백성들 앞에 그들이 본 가나안 땅을 보고를 합니다. और वे जो भेदिए जो एक ही जगह गए, एक ही जगह उन्होंने समय बिताए, 근데 여호수아와 갈렙 두 사람의 이야기와 나머지 정탐꾼 10명의 이야기는 전혀 다른 모습들을 볼 수 있습니다. लेकिन कालेब और यहोशू के जो कहानी और 10 भेदियों के तुलने में पूरी तरह से अलग थी। 여호수아와 갈렙은 가나안 땅을 봤을 때 과연 하나님의 말씀대로 젖과 꿀이 흐르는 땅이다라고 जब 이야기했습니다. यहोशू और कालेब ने जो कनान का देश देखा, उन्होंने कि सचमुच में ये परमेश्वर के वचन के अनुसार दूध से भरा हुआ, 그러나 मधु से भरा हुआ 반대로 देश है। 정탐꾼 10명은 아니다. 그 땅은 거민을 삼키는 땅이다라고 했습니다. लेकिन दूसरे बाजू में ये 10 भेदियों ने कहा कि ये जो भूमि जो है निवासियों को निगलने वाली भूमि 인간의 है। 그 수고와 땀방울과 노력을 해서 씨를 뿌린다 하더라도 그 땅은 수확을 얻을 수 없는 척박한 땅이고 거민을 삼키는 땅이라고 그렇게 악평을 했습니다. उन्होंने एक बुरी खबर लेकर आए कि ये वो जमीन है, हालांकि आप कितने मेहनत या कि उसमें मेहनत करो लेकिन फिर भी इसमें कुछ उपज नहीं निकलेगी, ये बंजर जमीन है। 여호수아와 갈렙은 가자, 하나님 우리에게 주셨다, 그들은 우리 밥이다라고 했습니다. लेकिन यहोशू और कालेब ने कहा कि चलो हम जाएंगे, वो हमारा खाना है। 그러나 10명 아니다. 우리는 그들 안악 자손을 봤는데 그들은 너무 힘이 세고 크기가 크고 싸움을 잘하는 민족이다. और उन्होंने कहा कि नहीं, ये अना के वासी बहुत ही मजबूत है, ऊंचे है, ढील ढोल के है और बहुत ही शक्तिशाली है। 우리는 그들에 비하면 메뚜기다. और उनके तुलने में हम सिर्फ एक टिड्डियों के 우리는 समान हैं। 절대로 그 가나안 땅을 들어갈 수가 없다. हम कभी कनान देश में प्रवेश नहीं कर सकते। 자, 여러분. 똑같은 Everyone. 땅을 똑같은 장소에서 똑같이 보고 왔는데 उन्होंने उस जमीन को एक ही जगह से उन्होंने देखा, 왜 이렇게 다릅니까? लेकिन क्यों वे बहुत ही अलग थे? 그러면 정탐꾼 12명만 그렇습니까? ये सिर्फ 12 भेदियों के लिए था क्या? 아닙니다. नहीं। 역시 이 시대에도 마찬가지입니다. और इस युग में भी यही चीज को हम शामिल 자, कर सकते 믿음을 हैं। 가진 사람과 믿음을 안 가진 사람의 차이는 똑같은 걸 똑같은 환경에서 보더라도 전혀 다르게 볼 수가 있는 것입니다. और जिनके पास विश्वास है और जिनके पास विश्वास नहीं है, हालांकि एक ही चीज को देखते हैं लेकिन अलग अलग वो लोग देख सकते हैं।
그래서 이번 시간에 우리가 믿음을 통하여 예수 그리스도의 마음을 우리가 받게 된다면 और वचन के जरिए हमें यीशु मसीह के मन को स्वीकारना है। 예수님이 없는 우리의 눈으로 보는 것하고 예수님으로 눈으로 보는 것 전혀 차이가 있을 것입니다. और ऐसा भी फर्क हो सकता है कि ये यीशु की आंखों से देखने वाली चीज और बिना यीशु के आंखों से देखने वाली चीज। 그래서 예수님의 마음을 받아는 것이 바로 믿음의 삶이라고 이야기할 수 있겠습니다. और यीशु मसीह के मन को स्वीकारना, यही हम कह सकते हैं ये विश्वास का जीवन है। 반대로 예수님 마음 없이 우리 눈으로 본다면은 그는 육신의 삶이라고 이야기할 수 있겠습니다. और अगर हम बिना यीशु के आंखों के जरिए हम चीजों को देखते हैं वो 이런 아주 शारीरिक 중요한 जीवन है। 이야기를 이제 말씀 여러 예화와 여러 인물들을 통해서 말씀드리고자 합니다. और इसके बारे में विस्तार में बताना चाहूंगा मैं बाइबल के चरित्र और बाइबल के कहानियों के जरिए। 먼저 성경 출애굽기 저 4장에 있는 말씀을 여러분과 함께 같이 읽고 싶습니다. पहले तो मैं निर्गमन के 4 अध्याय के बारे में आपको से पढ़ना चाहूंगा। 예, 출애굽기 4장을 펴 주시길 바랍니다. कृपया करके निर्गमन का 4 अध्याय आप खोलिएगा। 예, 4장 1절 4 अध्याय का 1 वचन। 모세가 대답하여 가로되 그러나 그들이 나를 믿지 아니하며 내 말을 듣지 아니하고 이르기를 여호와께서 네게 나타나지 아니하셨다 하리이다. तब मूसा ने उत्तर दिया, हे वे मेरा विश्वास नहीं करेंगे और न मेरे सुनेंगे, वरन कहेंगे यहोवा ने 2절 मुझको दर्शन 여호와께서 नहीं 그에게 दिया। 이르시되 네 손에 있는 것이 무엇이냐 그가 가로되 지팡이니 यहोवा ने उससे कहा, तेरे हाथ में क्या है? वह बोला कि लाठी। 여호와께서 가라사대 그것을 땅에 던지라 곧 땅에 던지니 그것이 뱀이 된지라 모세가 뱀 앞에서 피하매. तीसरा वचन, उसने कहा कि उसे भूमि पर डाल दे। जब उसने उसे भूमि पर डाल दिया 4절 तब वो 여호와께서 सर बन 모세에게 गई 이르시되 और 내 मूसा 손을 उसके सामने 내밀어 से 그 भागा। 꼬리를 잡아라. 그가 손을 내밀어 잡으니 그 손에 지팡이가 된지라. तब यहोवा ने मूसा से कहा, हाथ बढ़ाकर उसकी पूंछ पकड़ ले, ताकि वो तेरा विश्वास करे कि तुम्हारे पितरों के परमेश्वर अर्थात अब्राहम के परमेश्वर, इसाक 예, के 여러분 परमेश्वर। 출애굽기 4장은 하나님께서 모세를 통해서 이스라엘 백성들을 애굽에서 이끌어서 가나안 땅으로 이끌어가기 위하여 모세를 부르는 이야기입니다. 4 अध्याय में परमेश्वर मूसा को बुला के इजराइलियों को बाहर निकलने के लिए मिस्र देश से। 자, 하나님은 이스라엘 백성들을 애굽에서부터 건져낼 수 있는 능력이 있습니다. परमेश्वर के पास सामर्थ्य है इजराइल लोग को मिस्र देश से बाहर निकालने के लिए। 그러나 문제는 이스라엘 백성들을 이끌어낼 모세는 그러한 마음이 전혀 없는 것입니다. लेकिन जो लीडर मूसा के पास कोई क्षमता नहीं थी ये करने के लिए। 자, 지금은 그 세계에서 제일 막강한 아주 군대가 많은 또 힘이 있는 애굽 나라죠. मिस्र के पास बहुत बड़ी सेना है, बहुत सारे शस्त्र है, 이제 그에 비해서 이스라엘 백성들은 그들의 종입니다. लेकिन विरुद्ध दिशा में इजराइल लोग सिर्फ एक नौकर थे, दास थे। 그는 430년간 노예 생활을 했고요. उन लोग 430 साल के लिए उन लोग गुलाम थे। 전쟁할 수 있는 군인도 없고 무기도 없습니다. उनके पास कोई शस्त्र नहीं, कोई सैनिक नहीं है। 마치 이 비교를 하자면 애굽은 사자와 같고요. अगर हम तुलना में जाए तो मिस्र वो शेर के समान है 이스라엘은 토끼와 같습니다. और इजराइल जो है खरगोश के समान है। 토끼가 어떻게 사자를 이길 수 있습니까? कैसे ये खरगोश शेर को हरा सकता है? 절대 있을 수 없습니다. ये कभी संभव नहीं हो सकता। 마치 이스라엘 백성들은 애굽을 절대로 이길 수가 없습니다. उसी तरह जो इजराइल लोग कभी मिस्र के ऊपर हरा नहीं सकते हो। 그런데 이스라엘 백성들이 어떻게 이 애굽을 이기게 되었습니까? लेकिन कैसे वो मिस्र को हरा सके थे? 하나님께서 이스라엘 백성들을 이끌어내셨기 때문에 가능한 것입니다. ये इसलिए संभव था कि परमेश्वर ने इजराइल के लोगों को मिस्र से बाहर निकाला 하나님은 이런 일들을 하시기를 원하셨습니다. और परमेश्वर ये काम करना चाहता था। 인간 가운데 하나님의 마음을 받아서 이 일들을 할 수 있는 사람을 찾았죠. और ये काम करने के लिए मनुष्य के बीच में परमेश्वर एक व्यक्ति को ढूंढना चाहते थे काम करने के लिए। 바로 모세였습니다. 모세 나이 40세에 자기가 애굽의 왕자로서 왕궁에서 그가 살았지만 그는 히브리인이라는 것을 알게 되었습니다. और 40 वर्ष तक मूसा जो है एक राजकुमार के तौर पे राजमहल में रहा। उसके बाद को पता चला कि वो एक हिब्रू है। 그래서 나이 40살 때에 자기의 민족을 자기가 구하려고 한 적이 있었습니다. जब वो 40 वर्ष का हुआ तब ये लोगों को बचाना चाहता था। 그런데 저 모세는 그 40세에 실패를 했습니다. 단 한 명도 그는 구원할 수 없었습니다. लेकिन 40 वर्ष की उम्र में वो नाकामयाब हुआ, एक व्यक्ति को भी बचा नहीं सका वो। 출애굽기의 2장에 그 자세하게 나오죠. और ये निर्गमन के 2 अध्याय में अच्छी तरह से इसके बारे में लिखा गया 그래서 है। 그는 실패하여서 미디안 광야로 이제 40년간
그 이드로의 양무리를 치는 일을 했습니다. और वो जंगल में 40 वर्ष का था और इजराइल के भेड़ों को उसने चराया। 이제 나이 모세 80세가 되었습니다. और जब मूसा 80 वर्ष का हुआ, 이제는 자기는 아무것도 할 수 없다고 생각할 때 जब उसने देखा वो कुछ नहीं कर सका था, 하나님은 오늘 출애굽기 3장 4장에서 이제 모세에게 나타나셨습니다. और निर्गमन के 3 और 4 अध्याय में परमेश्वर जो है मूसा के पास आया 하나님은 이스라엘 백성들을 애굽에서 이끌어내는 일을 모세를 통해서 하시기를 원하셨습니다. और मूसा के जरिए परमेश्वर जो इजराइल लोग को मिस्र देश से बाहर निकालना चाहता था। 근데 문제는 뭐냐면은 모세의 마음에 하나님을 믿는 믿음이 없었기 때문에 이게 불가능하다고 했습니다. लेकिन प्रॉब्लम समस्या ये थी कि मूसा के मन में ये उसने उसको लगा कि असंभव है ये। 그래서 하나님 모세를 부르죠. परमेश्वर ने मूसा को बोला, हे मूसा, 모세야, 네 손에 있는 게 뭐냐? हे तेरे हाथों में क्या है? 예, 이거요, 지팡이입니다. हाँ, ये तो लाठी है। 예, 이 지팡이 지금까지 내가 이 지팡이에 있으면 든든하고 안전하고 이 지팡이가 나를 들짐승들에게 보호를 했어요. और मैंने इस लाठी के ऊपर निर्भर हुआ, इसने मेरी रक्षा की, उसने मेरी सुरक्षा की। 그래서 이 지팡이는 내게 정말 소중하고 중요한 겁니다. और ये लाठी बहुत ही महत्वपूर्ण है और सुरक्षित है। 보호했고요. उसने मेरी रक्षा की है, 왔습니다. उसने मुझे संभाला है। 하나님은 아니야. लेकिन परमेश्वर कहते हैं कि नहीं, 너 지팡이 그거 뱀이야. तुम्हारा लाठी वो सर्प है, 너 사탄이야. 그거 वो शैतान है, 너를 해칠 수 있는 वो तुझे 거야. हानि पहुंचा सकता है। 뭐라고요? क्या 이게 나를 해친다고요? क्या ये मुझे हानि पहुंचा सकता है? 이게 사단이라고요? क्या ये शैतान है? 예, 모세는 도저히 믿어지지 않았습니다. और मूसा इसके ऊपर भरोसा कर नहीं सका था। 성경에 이런 이야기 너무 많습니다. और बाइबल में से बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं। 요금 2장에 보면은 यूहन्ना के 2 अध्याय में 갈릴리 가나의 혼인 잔치에 갔을 때 그 जब यीशु मसीह जो है काना गलीली के शादी के भोज में गया 잔치집에 포도주가 모자랐습니다. और शादी के भोज में दाक मधु खत्म हुआ। 자, 주인은 이 포도주를 해결할 수 있는 포도주가 다 없어졌는데 해결할 수 있는 방법이 없었죠. दाक मधु खत्म हुआ तो अभी ये प्रधान जो भोज के प्रधान के पास अभी कुछ भी चुनाव नहीं, कुछ करने के 주인, लिए। 아이고 큰일 났다. 이 귀한 손님들을 모셔놓고 이게 무슨 창피냐. 이렇게 갑자기 포도주가 없어지다니 하고 큰 근심에 빠졌죠. अब ये बहुत ज्यादा निराशा में गिरा था कि ये सोचते हुए कि क्या करे, बहुत सारे मेहमान हैं अभी। 근데 예수님은 하인들을 통해서 일을 하셨습니다. लेकिन उस घर में यीशु ने उस नौकरों के जरिए काम किए। 두세 통 드는 큰 돌 항아리에 물을 채우라는 겁니다. वो पानी के घड़े में पानी को भर दो। 예, 물을 채웠습니다. उन्होंने पानी को भर दिया 그 다음에 포도주를 달라는 손님들에게 연회장에게 갖다 주라는 거예요. और वो And सारे to लोग जो people, इंतजार to कर the रहे थे master दाक of मधु the को feast who यीशु ने कहा who उसको are लेकर wanting the जाओ। wine, they said, take it to them. 하인들은 이렇게 이야기했을 겁니다. लेकिन नौकरों ने कहा 예수님, कि यीशु 이 항아리에 우리가 물을 채웠습니다. हम ही ने तो इसको पानी भर दिया है, Water. ये तो पानी है, 그 사람들은 물 달라고 한 게 아니고요. उनको पानी नहीं चाहिए। 달라고 이야기를. दाक मधु माँ पूछ रहे हैं। 물론 예수님 아시고 계시죠. जरूर ये यीशु जानता है इसे। 하인들은 물이라고 했고요. नौकरों ने कहा कि ये पानी है, 예수님은 포도주라고 이야기를 लेकिन यीशु कहता है कि ये दाक मधु है। 이것이 갈릴리 가나의 예수님의 처음 표적이었습니다. काना गलीली में यीशु मसीह ने पहला चमत्कार किया। 자, 이 무슨 의미를 이야기하고 있습니까? अभी वो क्या कह रहा है हमसे? 자, 예수님은 포도주라 하고 하인은 यीशु कहता है 물이라고 कि ये दाक 했습니다. मधु है, नौकर कहते हैं कि ये पानी है। 누구 생각이 맞습니까? तो किसके सोच सही है? 당연히 하인들의 이야기가 맞죠. जरूर जो नौकर कहते हो सही है, 그러나 하나님 세계에서는 틀린 겁니다. लेकिन परमेश्वर की दुनिया में ये गलत है। 하나님이 세계에서는 예수님이 포도주라고 하는 그 포도주, 그 말이 맞는 겁니다. परमेश्वर की दुनिया में यीशु कहता है कि ये दाक मधु है, तो वो दाक मधु है। 예, 그 물은 포도주로 변했고요. पानी दाक मधु बन चुका है। 포도주로 인하여 많은 손님들에게, 연회장들에게 또 그 주인들에게 큰 기쁨이 되었습니다. और ये चीज जो है वो मेहमानों को और भोज के प्रधान को आनंद में बदल गया। 이 이야기는 갈릴리 가나에 그냥 물이 포도주로 변한 이야기만 아니라 सिर्फ ये कहानी एक पानी दाक मधु में बदल रहा है, ये वो वाली कहानी नहीं है, 바로 우리의 이야기라는 것입니다. लेकिन ये हमारी कहानी है। 우리가 볼 때, हमारी नजरों में 하나님이 볼 때 जब परमेश्वर देखता है 전혀 다르다는 것입니다. ये बहुत ज्यादा अलग है। 자, 그래서 하나님은 모세에게 너 그거 뱀이야. मूसा को परमेश्वर ने कहा कि वो सर्प है, 그거 너를 해치는 거야. वो तुझे हानि पहुंचा सकता है। 모세, 아닙니다, 하나님. मूसा ने कहा नहीं परमेश्वर,
팡이에요. ये तो लाठी है, 나를 इस 지켜줬어요. लाठी ने मेरी रक्षा की है, 나의 보호자예요. ये हमारा रक्षक है। 내가 이것만 잡고 있으면 내 마음이 든든해요. अगर मैं इसको धर रहा हूँ, पकड़ रहा हूँ, तो मैं सुरक्षित महसूस कर 그건 रहा हूँ। 모세의 생각이었어요. लेकिन वो मूसा का सोच था। 하나님 아니라는 거. परमेश्वर ने कहा कि नहीं, 그 잡고 있는 지팡이를 던지라고 했어요. और परमेश्वर ने कहा कि जो लाठी तुमने अपने हाथों में पकड़ उसको जमीन पे डाल दो। 그래서 모세의 손에서 놓았죠. और मूसा ने वैसे किया, और फिर वो सर्प बना, 모세가 깜짝 놀랐습니다. और मूसा अचंभित हुआ। 그리고 그 뱀은 모세를 물려고 했습니다. और ये सांप जो है, सर्प जो है, मूसा को काटना 그래서 चाहता था, 모세는 도망을 가요. लेकिन मूसा वहां से भाग गया। 도망가는 모세를 하나님 부릅니다. परमेश्वर ने मूसा को बुलाया, 모세야, मूसा 너 저 뱀의 꼬리를 잡아. पूंछ से उसको पकड़ लो। 뭐라고요? क्या? 그러면 이 뱀이 나를 물지요. तो फिर ये सांप मुझे काट लेगा। 뱀 꼬리 잡아봐요. तुम पूंछ से उसको पकड़ लो तो 뱀이 돌아와서 by the 물지요. घूम के वो उसमें काट लेगा। 그래서 모세가 두려워하고 있는데 तो मूसा डर में था, 그래서 모세가 그 뱀 꼬리를 잡았죠. लेकिन फिर भी मूसा ने पूंछ से 근데 지팡이가 되었어요. धर लिया और फिर वो लाठी बना। 자, 지팡이라 할 때 하나님은 뱀이라 하시고요. जब मूसा ने सोचा कि वो लाठी, तो परमेश्वर ने कहा कि वो सर्प है। 이제는 뱀이라 할 때 하나님 또 지팡이라고 하시고 लेकिन जब उसने कहा कि ये सर्प है, तो लेकिन परमेश्वर ने कहा कि वो लाठी है। 하나님 왜 이거 모세에게 보여주신 겁니까? परमेश्वर ने ये ऐसी बातें क्यों दिखाई मूसा को? 모세는 내가 이거 지팡이라 할 때, 나를 보호했다 할 때 जब मूसा को लगा कि ये लाठी और ये मेरी रक्षा करता है, 하나님은 뱀이라고 하고 परमेश्वर ने कहा कि वो सर्प है। 사단이라고 이야기하고 परमेश्वर ने कहा कि वो शैतान है। 여러분 오늘 우리가 사역을 하거나 또 우리가 신앙을 할 때도 이런 경우들이 참 많습니다. और ऐसे बहुत सारे मामले हैं ऐसे, जब हम अपने मिनिस्ट्री करते हैं और आत्मिक जीवन जीते हैं, 때로는 이거 내가 잘했어. जरूर हम सोचते हैं कि मैंने तो कुछ अच्छा किया 아 है, 이거 진짜 하나님으로 말미암아 됐어. हाँ, लेकिन ये परमेश्वर की ओर से हुआ 아 है। 이거 너무 멋있네. हाँ, ये बहुत ही अद्भुत है, 야 이거 हाँ, 좋다. ये बहुत ही अच्छा है, 하나님으로 말미암아 된. ये परमेश्वर ने किया है। 그래서 때로는 우리가 기뻐할 때도 जब हम बहुत ही ऐसे आनंद में हैं, 하나님 볼 때는 너 그거 아니야. 너 도리어 그거 너를 해칠 수 있어. परमेश्वर कहता है नहीं, ये सिर्फ तुम्हें हानि पहुंचा सकता है। 제가 지금부터 한 15년 전에 지방의 도시에서 큰 예배당을 건축한 적이 있었습니다. और 15 साल पहले एक छोटे से इलाके में मैंने एक चर्च बांधा था। 그래서 5층으로 해서 큰 빌딩을 예배당을 건축을 했습니다. हमने एक पांच मंजिली इमारत बांधी थी, जो 사진 चर्च 하나 था। 나중에 보여드리겠습니다. मैं आपको बाद में उसका चित्र दिखाऊंगा। 자, 그래 사진을 이름 보시면 알겠지만 이거 아주 그 지역에서는 제일 큰 예배당을 지었습니다. जैसे आप देखते हो चित्र में, आप देख सकते हो कि इस इलाके के सबसे बड़ा चर्च था वो, 야, 그래서 저는 너무 만족했습니다. और मैं बहुत संतुष्ट था। 하나님 우리에게 땅을 주셨어. हाँ, परमेश्वर ने हमें जमीन दिया है, 또 우리에게 많은 연보를 주셔서 우리가 건축을 하게 됐어. परमेश्वर ने बहुत सारे ऑफरिंग दी जिसकी वजह से हम बांध सके थे, 우리가 건축 허가를 낼 때 पर बिल्डिंग का परमिशन मिला, 하나님 정말 기적적으로 도와주셨어요. परमेश्वर ने बहुत ही चमत्कार रूप से हमारी मदद की, 많은 일꾼들이 와서 이 예배당에 봉사를 했을 때 और बहुत सारे कामगार आए, बहुत सारे लोग आए उसमें वॉलंटियर के काम किए इस पे। 나는 하나님으로 말미암는 그 놀라운 일들 속에 내 마음은 허무한 마음을 가지고 있었습니다. और ये जो परमेश्वर ने काम किया, इसके ऊपर मेरा एक संतुष्ट वाला मन था। 야, हाँ, 예배당을 मैंने 잘 ये 지었어. चैपल चर्च को अच्छी तरह से बांधा है, 야, 이 지역에서 이 도시에서 제일 큰 예배당이잖아. और इस इलाके में, इस शहर में सबसे बड़ा ये चर्च है। 야, 하나님이 나에게 이 주시는 이거 놀라운 역사야. ये परमेश्वर की ओर से बहुत ही अद्भुत काम है ये। 예, 저는 그런 마음에 젖어 있었습니다. और उन दिनों में 이स प्रकार के मन से था 한 मैं। 번은 저희의 스승이신 우리 박옥수 목사님께서 이제 그때 저희 이 교회에 방문을 했어요. उस वक्त पास्टर ओक्सुपाक जो मेरे शिक्षक है, वो उस चर्च में आए, 그래서 이제 우리가 헌당 예배를 이제 드리는데요. और क्योंकि हमने नया बिल्डिंग बांधा था, तो सर्विस, हमने पहला सर्विस शुरू किया। 그래서 나는 그 예배당을 잘 지은 것도 많은 간증을 주신 것 때문에 내가 목사님 앞에 자랑을 하면서 막 내가 이제 막 이제 좋은 이야기를 했습니다. और मैं अपनी बड़ाई मार रहा था पास्टर को, ये सारी गवाही की कैसे परमेश्वर ने मदद की, वो सारी ऑफरिंग मिले, इस प्रकार से सारी बातें कह रहा था। 갑자기 목사님께서 저에게 이야기하셨습니다. लेकिन अचानक से पास्टर ने मुझसे 이 कही, 목사, हे पास्टर ली, 이 목사가 이 예배당을 잘 지은 것 때문에 야 내가 예배당을 잘 지었어 하고 허무한 마음 가져본 적이 없는가? क्या आपके पास एक संतुष्ट वाला मन नहीं क्या, क्योंकि आपने ये अच्छी तरह से
जो आज बांधा 예, इसलिए 예, 목사님 제 마음에 그런 마음 많았습니다. 아, 내가 예배당 잘 지었구나 하는 그런 마음 많았습니다. हाँ पास्टर बहुत सारे ऐसे मन है मेरे पास कि मैंने ये चर्च को अच्छी तरह से बांधा है 목사님이 정색을 하시면서 이 목사 그러면 큰일 나. और वे बहुत ही गंभीर हुए उनका कि पास्टर इस तरीके से अगर आप जाओ तो आप कठिनाई में गिरोगे 자네 그 마음 가지고 있으면 그 저주받아 망해. इस प्रकार का आपके पास मन है तो आप सिर्फ बर्बाद होगे शापित होगे 저는 한 번도 그렇게 생각하지 않았습니다. लेकिन मैंने ऐसे कभी नहीं सोचा 아, था 난 예배당 잘 지었다고 생각해. मैंने तो सोचा था मैंने अच्छी तरह से 많은 चर्च को 안정을 बांधा है 주셨다고 생각해. मुझे ऐसा लगे कि परमेश्वर बहुत सारी गवाही दी है 자, 이 도시의 제일 큰 예배당이잖아. इस इलाके के सबसे बड़ा चर्च है ये 자, 내 마음에 하나님이라고 했지만 저는 정확하게 내 마음을 살펴본 겁니다. मैंने कहा कि ये परमेश्वर है लेकिन परमेश्वर के दास ने मेरे मन में देखा 많은 성경에뿐만 아니라 제 주변에도 많은 사람들이 하나님의 큰 역사를 이루고도 교만해져서 결국은 버림을 받는 많은 경우들을 본 적이 있었어요. मैंने बहुत सारे ऐसे मामले देखे कि मेरे इर्द गिर्द के लोगों ने परमेश्वर के बहुत सारे काम को देखे लेकिन बाद में चर्च को छोड़कर चले गए 그래서 그때 15년 전에 목사님께서 자네 흐뭇한 마음 가지며 큰일 나 저주받아 망해라는 그 말씀은요. और 15 साल पहले जो पास्टर ने मुझसे कहा कि अगर तुम्हारे पास ऐसा मन है तो तुमसे बर्बाद होगे शापित हो जाओगे 합치 하나님은 나에게 종을 통해서 가르쳐 주는 큰 계시라고 생각이 들어요. और मैं सोचता हूँ कि बहुत बड़ा मेरे लिए एक रहस्य एक प्रकट हुआ मेरे मन को 그 परमेश्वर के दास ने 후로도 मुझे दिखाया 제가 아프리카 선교를 담당을 했기 때문에 자주 아프리카를 간 적이 있는데요. और उसके बाद जैसे मैं अफ्रीका के इंचार्ज था बहुत बार मैं अफ्रीका गया था 예, 거기 아프리카에서 일어나는 그 놀라운 구원의 역사가 귀한 간증들이 제가 많았을 때 जब मैंने देखा बहुत सारे वहाँ पे साक्ष्य गवाहियाँ और फिर उद्धार की 저는 कहानियाँ 그때 나도 모르게 내 마음에 허무한 마음을 가진 적이 많았습니다. और जब मेरे पास ऐसा मन था बहुत बार मैं नहीं जानते हुए भी इस प्रकार का संतुष्ट वाला मन 그때 था 목사님은 내 곁에 없었지만 목사님의 음성은 내게 자주 들렸습니다. और पास्टर मेरे बगल में थे मैं उनकी आवाज़ को सुनना चाहता था 자네 이번 아프리카 일로 허무한 마음을 가져본 적 있나? अफ्रीका में जो कुछ भी हुआ इससे आपका मन कभी संतुष्ट नहीं था क्या 깜짝 놀라죠. मैं बहुत शौक हुआ 목사님 음성으로 나에게 말한 건 아니지만 ऐसा नहीं कि पास्टर ने एक आवाज़ से मुझसे बातें की 내 마음에 정말 하나님 나에게 보여준 계시다라는 마음이 मैं 들어요. सचमुच में ऐसा सोचता हूँ कि परमेश्वर ने मेरे मन को जैसे प्रकट 그래서 किया 저는 그 모든 마음을 다 비우고 और इस सारे मन को मैं सचमुच में ईर्ष्या करता हूँ 주님 정말 나는 아무것도 아닙니다. प्रभु सचमुच में मैं कुछ नहीं हूँ 정말 주님이 सचमुच 하셨습니다. प्रभु ये आपने किया है 정말 악하고 더럽고 엄란한 मैं तो 놈입니다. दुष्ट और गंदा और वासना से भरा हुआ व्यक्ति हूँ 저주를 받아 정말 마땅한 मैं ऐसे 사람입니다. व्यक्तियों की तरफ शापित ही होना चाहिए था 그런데 진짜 하나님 은혜 입어가지고 이런 일들을 하게 된 겁니다. लेकिन सिर्फ परमेश्वर के अनुग्रह ही से मैं ये कर सका था 저는 그때 이후로부터 자주 내 마음에 높아지는 마음 앞에 और तब तक मेरा मन जो है घमंडी होने के पहले 하나님 종이 나에게 말씀해 주는 그 말씀은 내게 마치 밤하늘의 캄캄한 바다 위에 등대와 같았습니다. और पास्टर का शब्द जो है एक प्रकाश स्तंभ की तरह था जैसे एक अंधेरे रात के 그래서 समान 캄캄하지만은 등대의 불빛을 보고 배가 그것을 जैसे 향하여 जैसे कि 나가는 अंधेरा जो 것처럼 रात जैसे बहुत ज्यादा अंधेरा है और जो प्रकाश स्तंभ को देखकर जहाज 자네 अपना 흐뭇한 रुख 마음 लेती 가진 है 이 목사 흐뭇한 마음을 가진 적이 있나? क्या तुम्हारे पास कभी ऐसा संतुष्ट वाला मन 그 था 말씀 하나는 वो एक शब्द 내 신앙에 있어서 내 사역에 있어서 정말 등대와 같이 और ये एक 되었습니다. प्रकाश स्तंभ के समान था मेरे मिनिस्ट्री और मेरे आत्मिक जीवन में 하나님 지금 모세를 통하여 이 이스라엘 백성들을 이끄는 놀라운 일들을 지금 하나님 준비하고 계시는데 और मूसा के जरिए परमेश्वर जो इजराइल लोग को मिस्र से बाहर निकाले 하나님 모세를 परमेश्वर ने 불렀습니다. मूसा को पुकारा 모세가 능력이 있고 힘이 있어서가 아니라 इसलिए नहीं कि मूसा को कुछ क्षमता था या कि मजबूत था वो 자기 생각을 버리고 말씀 그대로 받아들일 수 있는 그 사람을 하나님 찾은 거죠. और परमेश्वर किसी को ढूंढ रहा था कि परमेश्वर के मन को स्वीकार के वो काम करे 그래서 나이 40살 때가 아니라 나이 80살 때 하나님 모세를 इसलिए 불렀어요. परमेश्वर ने मूसा को तब नहीं बोला जब वो 40 वर्ष का था लेकिन तब बोला जब वो 80 वर्ष का था 제가 난 아무것도 할 수 없어. लेकिन मूसा कह रहा था हाँ अभी मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ 나는 이제 머리가 하얘. हाँ देखो मेरा बाल भी सफेद हो 난 이제 चुका 40년 है 동안 양치는 동안에 나는 애굽에 40년 동안 배웠던 모든 학문과 학술 다 잃어버렸어. और 40 साल के लिए भेड़ों को चराते हुए मैं सारे बुद्धि को सारे ज्ञान को मैं भूल गया मिस्र में जो मैंने पाया था 그때 하나님께서는 역사하시는 것을 볼 수 있어요. हम देख सकते हैं कि उस समय परमेश्वर ने काम किया
너 지팡이 아니야. हे वो तुम्हारी लाठी नहीं है, 너 그거 너 도우는 거 वो 아니야. तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, 너 도리어 그 뱀이야. 너 해치는 거야. वो एक सर्प है जो तुम्हें हानि पहुंचा सकता है। 아닙니다, 하나님. वो कहते कि नहीं परमेश्वर, 돕는 보호고 나의 의지하는 지팡이입니다. ये मेरी रक्षक है, ये वो लाठी है जिसके ऊपर मैं निर्भर हुआ। 하인들 아닙니다. 이거 물입니다. नौकरों ने कहा कि नहीं ये पानी है, 우리가 물을 채운 건데요. हम ही ने तो इसमें पानी भरा है। 예, 그런 것처럼 우리가 보는 눈이 있습니다. तो ऐसे आके जो हम देखते हैं, 예, 이스라엘 백성들 12 정탐꾼들은 뭐라고 이야기합니까? और जो 12 भेदिए इजराइल को उन्होंने क्या 예, कहा, 그들은 자기들이 본 것을 이야기를 한 거죠. जो उन्होंने देखा उसको उन्होंने कहा। 야, 그 지금 현재 그 가나안 족속들은 키가 큰 아나 족속들이 있더라. 네피림 족속들이 거기 वहाँ 있더라. पे अनाकवासी है, बहुत ही लंबे चौड़े है, ढील ढाल के है, 우린 그들을 이길 수가 और हम 없어. उनके सामने सिर्फ एक टिड्डियों के 우린 समान 그들 है, 보기에 메뚜기야. टिड्डियों के समान है। 맞습니다. जी हाँ, वो सही है, 정확한 이야기입니다. वो सही है। 그들이 거짓말한 게 아니고요. वो ऐसा नहीं कि उन लोग झूठ बोल रहे हैं, 진짜 말 맞습니다. जो कुछ भी उन्होंने कहा वो सही था, 그는 하나님 볼 때 लेकिन परमेश्वर की नजर में 흘린 겁니다. वो गलत था। वो 물입니다. पानी है, 흘린 겁니다. वो गलत है, वो पानी है, 팡입니다. ये लाठी है, 보호했습니다. इसने मेरी रक्षा की, 흘린 거라는 것이 नहीं वो गलत है। 하나님 그걸 보여주시길 원하신다는 거예요. और ये परमेश्वर हमें बताना चाहता है। 그다음 또 하나님이 이제 모세에게 부릅니다. और परमेश्वर ने मूसा को पुकारा, 여호와께서 또 가라사대 네 손에 품을 넣으라 하심에 손을 품을 넣었다가 내어 보니 그 손이 문둥병이 발하여 눈같이 फिर 흰지라. यहोवा ने उससे कहा कि अपना हाथ जो है छाती पर रख, और उसने जब अपने छाती पर रखा तो ढांप लिया। फिर जब उसने निकाला तब देखा कि वह हाथ कोढ़ से 7절에 가라사대 네 손을 다시 품에 넣으라 하심에 그가 다시 손에 품을 넣었다가 내어 보니 손이 여상하더라. कोढ़ के कारण श्वेत हो चुका था। और 7 वचन, जब उसने कहा कि अपना हाथ छाती पर फिर से रखकर ढांप, तो उसने अपना हाथ छाती पर रखा। 이제 하나님이 두 번째 모세에게 또 말합니다. परमेश्वर ने दूसरी बार मूसा को पकड़ा, हे मूसा, 너 손 한 펴봐. अपने हाथों को फैला। 너 손 어때? कैसे तुम्हारा हाथ? 하나님 깨끗한데요. हाँ देखो, परमेश्वर तो साफ है। 깨끗해? क्या ये साफ है? 예, 깨끗한데요. हाँ ये साफ है। 아니야, 네 손 더러. नहीं, तुम्हारा हाथ गंदा है। 아니, 깨끗한데. नहीं, ये तो साफ है। 보세요, 하나님 깨끗하잖아요. देखो, परमेश्वर तो साफ है। 너 손에 품에다가 넣어 볼래? अपने छाती पर हाथ रख। 예, 넣었습니다. और मैंने किया। 그리고 너 한번 끄집어내 볼래? और उसको बाहर निकाल। 예, 냈습니다. 아. 깜짝 놀랐습니다. और फिर वो अचंभित हुआ, 문둥병이 발해가지고 희게 된지라. और उसका हाथ कोड़ी के जैसा था। 오, 하나님 내 손이 왜 이랬습니까? हे प्रभु, क्या हो रहा है मेरे हाथों को? 이 더러워졌습니다. ये गंदा हो चुका है, ये कोड़ी हो चुका है। 보세요. 너 아까 깨끗하다. लेकिन तुमने कहा नहीं था क्या ये साफ है? 예. 지금은 लेकिन अब क्या? 하나님 문둥병이 더럽습니다. अभी तो कोड़ी हो चुका है, ये 더럽습니다. गंदा हो चुका है। 안 더러운데? लेकिन वो गंदा नहीं है, 깨끗한데? वो साफ है। 아닙니다. 하나님 보십시오. 문둥병이 नहीं 더럽잖아요. नहीं, परमेश्वर इसको देखो, ये तो कोड़ लगा हुआ है। 그래. नहीं, वो साफ है। 품에 넣어봐. अपने छाती पे फिर से हाथ को रख 끄집어내봐. और बाहर निकाल। 깨끗하게 되네. फिर वो साफ हुआ। 하나님 깨끗하게 됐네요. ओ प्रभु, अभी वो साफ हुआ है। 역시 마찬가지입니다. वैसे ही 모세가 자기가 깨끗하다 할 때 जब मूसा ने कहा कि साफ था, 하나님 더럽다 하시고, परमेश्वर ने कहा कि ये गंदा है। 모세가 더럽다고 했을 때 जब मूसा ने कहा कि ये गंदा है, 하나님 깨끗하게 하셨습니다. परमेश्वर कहता है कि वो साफ है। 우리는 이 말은 무슨 뜻? इसका मतलब क्या है? 내가 손으로 하는 모든 일들, जो कुछ भी चीज मैं अपने हाथों से करता हूँ, 아 내가 선한 일들을 많은 일들이 있습니다. अगर कुछ बहुत अच्छे चीज मैंने किए हैं, 하나님은 그 일들 선하지 않다고 이야기. लेकिन परमेश्वर के पुकारता है कि वो अच्छा नहीं है। 우리가 하는 어떤 정성된 어떤 성실한 것으로 한다 하더라도 우리 인간에게서 나온 거는 선이 될 수가 없습니다. वो सारी बातें जो हमारे आस्था से अच्छाई से करते हो, कभी अच्छा नहीं हो सकता। 그래서 모세는 하나님께서 네 손 깨끗해 안 깨끗해 너 더러워. तो परमेश्वर ने पूछा, क्या तुम्हारा हाथ साफ है? नहीं, वो गंदा है। 지금 하나님 그걸 보여주고 계십니다. और ये परमेश्वर उसको दिखाना चाहता है। 자, 그래서 모세의 생각을 바꾸는 것입니다. और परमेश्वर मूसा के सोच को बदलने का काम करता है। 하나님 이거 나 지금까지 지팡이 나 보호했습니다. हाँ, ये परमेश्वर लाठी ने मेरी रक्षा की। 아니야, 너를 해치는 नहीं, ये 뱀이야. सर्प है जो उसको तुम्हें हानि पहुंचा सकता 내가 है। 손으로 한 일이 정말 선한 일이 많습니다. परमेश्वर अपने हाथों से मैंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, 아니야, 네 손으로 하는 건 다 더러운 लेकिन 거야. जो कुछ भी तुम अपने हाथों से करते हो गंदे हैं। 또 세 번째 뭐 보여주죠. और तीसरा और कुछ दिखाता है। 9절입니다. 9 वचन, 너는 하수를 조금 치아에다가 육지에 부어라. 네 취한 하수가 육지에서 피가 되리라. तब तू नील नदी से कुछ
जल लेकर सूखी भूमि पर डालना और जो जल तू नदी से निकालेगा वो सूखी भूमि पर लहू 자, 이 बनेगा। 나일 강입니다. ये नील नदी है। 모든 주변에 있는 사람들의 생명의 젖줄입니다. नील नदी सारे लोगों के इर्द गिर्द कौन जीवन है, 생명입니다. जीवन है, 홍수입니다. जीवन का पानी है, ये नदी है। 하나님 뭐라고 해요? लेकिन परमेश्वर क्या कहता है? 사망이요. ये मृत्यु है, 그 죽음이요. वो मृत्यु है, 피야. वो लहू है। क्या? 자, 여러분, सभी लोग 이제 자기가 본 옳다고 하는 게 뭐가 있습니까? अभी क्या चीज है जो मूसा को कह सकते कि वो सही है? 아무것도 없습니다. 하나님, हे प्रभु, 내가 보는 게 다 틀렸습니다. जो कुछ भी मैंने देखा तो वो गलत है। 내겐 선한 것이 없네요. मेरे अंदर कुछ भी अच्छाई नहीं 내게 है। 나오는 모든 것이 거짓이네요. सारी बातें जो मेरे अंदर से निकलती है वो 그렇게 धोखा है। 고백할 수 있는 사람, जो कोई भी ऐसा कबूली कर सकता है 하나님 그 사람 통해서 일하십니다. तो परमेश्वर ऐसे लोगों के जरिए काम 뭔가 करता 내 है। 생각이 옳다고 생각하고 जो लोग सोचते हैं कि मेरे सोच सही 뭔가 है, 내가 할 수 있다라고 생각하는 사람은 जो लोग सोचते हैं हम कुछ कर सकते हैं, 어떤 일도 할 수가 वे 없습니다. कुछ भी नहीं कर सकते। 우리 예수님께서 2000년 전에 이 땅에 인간의 몸으로 내려오셨을 때 2000 साल पहले जब यीशु जो है मनुष्य के शरीर धारण करके दुनिया में आए, 그때 예수님께서 마태복음 7장에 좋은 나무와 나쁜 나무에 관한 이야기. मत्ती के 7 अध्याय में यीशु मसीह जो है अच्छे पेड़ और बुरे पेड़ के बारे में बातें कर रहे हैं। 거기에 보면은 나쁜 나무가 좋은 열매를 맺을 수 없다고 합니다. वहां उसने कहा कि जो बुरा पेड़ अच्छा फल नहीं ला सकता, 또 반대로 좋은 나무가 나쁜 열매를 맺을 수 없다고 합니다. उसने कहा कि अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता। 자, 거기에 우리가 좋은 나무는 예수님을 가리키고요. अच्छा पेड़ ये दर्शाता है यीशु मसीह के लिए, 나쁜 나무는 바로 오늘 우리 인간을 이야기하고 있습니다. और बुरा पेड़ हम मनुष्य को दर्शाता है। 그리고 우리 인간에게는 선한 것이 전혀 있을 수 없어요. हम मनुष्य के अंदर कुछ भी अच्छाई नहीं है, 그래서 우리 인간은 나쁜 나무이기 때문에 좋은 열매를 절대 맺을 수가 없습니다. और चूंकि हम लोग बुरे पेड़ है, कभी भी कुछ अच्छा ला नहीं 우리가 सकते। 성실해도 안 되고 वो ऐसा नहीं कि हम बुद्धिमान हैं, 우리가 정직하거나 착해도 안 됩니다. वो ऐसा नहीं कि हम कुछ अच्छे या कुछ ईमानदार हो सकते 우리 हैं। 인간에게 나오는 모든 것들은 다 거짓되고 다 악한 거기 때문입니다. सारी बातें जो हमसे आती है वो सब गंदे और धोखा देने वाले 오직 हैं। 좋은 나무 한 그루 있다면 그는 예수님 나무밖에 없습니다. अगर एक ही अच्छा पेड़ है तो वो है यीशु मसीह। 그래서 그 사실을 자기에게 선한 것이 없다는 그 사실을 발견한 사람은 और वो लोग जो आविष्कार करते हैं कि उनके अंदर कुछ भी अच्छाई नहीं है, 자기에게서 나오는 모든 것이 거짓되고 틀렸다는 걸 아는 사람은 वो जो लोग जानते हो कि सब कुछ उनमें से निकलते हैं झूठा है और गलत है, 자기를 십자가에 못 박을 것입니다. 부인하게 될 것입니다. वे अपने आप को इनकारी कर सकते हैं, 자기를 버리게 될 वे 것입니다. अपने आप को फेंक सकते हैं, 예수 그리스도의 마음을 받아들이게 됩니다. और फिर वे यीशु मसीह के मन को स्वीकार सकते हैं। 예수님의 마음을 통해서 하나님은 역사를 하실 것입니다. और परमेश्वर जो है यीशु मसीह के मन के जरिए काम कर 마치 सकता है। 하늘의 미랄이 땅에 떨어져 죽으면 죽지 않으면 하늘 그대로 남지만 और अगर एक बीज जमीन पे गिर के अगर मरता नहीं तो बीज ही रहेगा, 예 죽으면 많은 열매를 맺는다라고 이야기하고 있습니다. लेकिन अगर वो मरता है तो बहुत सारे फल को उत्पन्न कर सकता है। 이제 그런 것처럼 오늘 우리가 보고 있는 이 세계가 끝이 난다면 और जब वो दुनिया जो हम जब देखते हो वो खत्म होता है, 하나님 우리를 통해서 놀랍게 역사하실 수 तब 있는 것입니다. परमेश्वर बहुत ही अद्भुत रूप से हमारे अंदर काम कर सकता है। 자, 그래서 이제 모세를 통해서 하나님 이스라엘 백성들을 애굽에서 이끌어내시는 일들을 하는 것을 볼 수 있습니다. और हम देख सकते हैं कि मूसा के जरिए जो परमेश्वर जो इजराइल को मिस्र देश से बाहर निकालने का काम करता है। 예. 자, 그래서 하나님은 이제 유월절의 어린 양의 그 피를 문 임방에다가 바르고요. तब उन्होंने जो पर्व के भेड़ के लहू को दरवाजे और अलंगों पर छिड़काया, 그리고 그 안에서 문을 닫고 고기를 먹고요. और उन्होंने जो कोई भी दरवाजा बंद करके वो मांस को 그리고 खाए, 누룩이 없는 그 무교병을 이제 그들은 먹게 되는 것이죠. और फिर वे अकमेरी रोटी खाए। 하나님은 천사를 보내 가지고 और उस दिन परमेश्वर ने एक दूत को भेजा, 피를 바르고 떡을 먹는 그 집안 살리고 और जिस घर में उनका लहू छिड़का तो और रोटी खाए उन लोग जी गए, 그러나 그 피가 바르지 않고 떡을 먹지 않는 모든 가정들은 남자들은 장자들과 짐승들 물은하고 다 죽임을 당하죠. और वे सारे घर में जिसके ऊपर लहू नहीं छिड़का हुआ था और उन्हें रोटी नहीं खाए, वो सारे पहलोटे मनुष्य के क्या 피가 जानवर 발라져 सब मर गए। 있고 무교병을 먹는 그 이스라엘 집에는
한 명도 죽지 लेकिन 않았습니다. इजरायलियों के घर पे लहू छिड़का हुआ था और उन्होंने अख़मीरी रोटी खाई और कोई नहीं मरा। 제가 아까 이야기했죠. 애굽은 사자와 같다고 했고요. जैसे मैंने पहले कहा था कि मिस्र शेर के समान है और 이스라엘은 토끼와 같다. इजराइल खरगोश के समान है। 어떻게 이스라엘이 애굽을 이겼습니까? और कैसे इजराइल जो है मिस्र को हरा सका था, 토끼가 사자를 이길 수 있습니다. कैसे एक खरगोश शेर को हरा सका था। 그들은 두 가지였습니다. ये दो बातें हैं। 바로 유월절이라 하는 바로 어린 양의 피를 문에다가 뿌리는 일이었고요. पर्व के भेड़ के लहू को छिड़कने का काम 누룩 없는 떡을 먹는 무교절로 그들은 두 가지를 지켰습니다. और उन्होंने अख़मीरी रोटी के दावत को भी 바로 मनाया। 성경에서 유월절의 그 어린 양은 예수 그리스도를 이야기해 주고 있습니다. और पर्व के भेड़ ये दर्शाते यीशु मसीह के लिए। 그 양으로 말미암아 이스라엘 백성은 애굽에서 이끌어내는 것처럼 और उस भेड़ के जरिए परमेश्वर ने इजराइल को मिस्र देश से 예수 बाहर निकाला। 그리스도의 그 보혈은 큰 애국과 같은 이 사단의 건세, 그 사망의 건세에서 오늘 우리를 이끌어내는 이야기죠. और यीशु मसीह का जो लहू जो है हमें अंधकार के अधिकार से परेशानी के अधिकार से 어떻게 निकालता है। 이스라엘 백성들은 애굽을 이길 수 있었습니까? और कैसे इजराइल लोग मिस्र को मात कर 바로 सके थे। 유월절과 부교절이었습니다. और फिर पर्व की वजह से और फिर अख़मीरी रोटी की दावत की 양의 वजह से 피와 무교병이었습니다. वो पर्व के भेड़ के लहू की वजह 예, से 그게 हुआ। 성경학자들은 BC 1490 년경이라고 합니다. और बाइबल के स्कॉलर कहते हैं कि व्यवस्था जो है BC 14 से 19 में 14 से 90 में आया। 그리고 난 후에 예수님께서 और 1500 साल बाद यीशु मसीह दुनिया में आए। 예수님은 유월절 이 절기 때 어린 양이 되시기 위하여 예수님의 십자가에 못 박혀 피를 흘리십니다. और यीशु मसीह जो है क्रूस पे पर्व का भेड़ के समान वो उनको क्रूस पर चढ़ाया गया 예수님께서 था। 그날 잡히시는 날 밤 제자들의 12제자를 불러놓고 마지막 만찬 성찬을 합니다. और आखिर के दिन में जो यीशु को पकड़ा गया था उस दिन उन्होंने शिष्यों के साथ भोज किया 그리고는 예수님은 제자들에게 떡과 और 잔을 उसने 주십니다. शिष्यों को दाख मधु और रोटी दी। 바로 우리 죄를 위하여 흘리는 그 피고 바로 예수님의 몸이라고 합니다. ये लहू और यीशु मसीह का शरीर हमारे लिए दिया था। 그걸 기념하라고 이야기를 했어요. ये चीज उन्होंने मनाया 바로 유월절 무교절 절기를 이야기하고 있죠. और ये दर्शाता है जो पर्व के लिए और अख़मीरी रोटी के लिए 이걸로 애굽을 이긴 것처럼 इजराइल ने मिस्र को हराया, उन्होंने 바로를 이겼던 것처럼 फेरो को हराया। 바로 오늘 예수님의 피와 예수님의 그 살을 성찬을 통해서 기념으로 하는 그 이유는 और वो जो कारण वो वजह क्यों हम लोग मनाते हैं प्रभु भोज को, शरीर और लहू को, 예, 예수님의 몸과 예수님의 그 피로 말미암아 오늘 우리는 사탄을 이기고 और यीशु के शरीर और यीशु के लहू से हम 사망을 이기고 शैतान को और मौत को हम लोग 사탄과 हराते 저주를 हैं, हम 이기고 शाप को और न्याय को हराते हैं, 우리는 질병을 이기고 사망과 우리가 고통을 이겨버렸습니다. हम निराशा और दर्द को हराया। 그 예수님 वो यीशु 이제 우리 안에 계십니다. वो हमारे अंदर है। 누구든지 예수 그리스도를 마음에 영접을 하고 जो कोई भी अपने मन में यीशु को स्वीकारता है 우리의 모든 죄가 영원토록 예수님으로 말미암아 우리가 어렵게 되어졌다는 사실을 믿는 자에게 जो विश्वास करते कि यीशु मसीह के जरिए उनके पाप अब सदा के लिए निकल गए, 하나님 우리에게 주시는 놀라운 선물이라고 이야기할 수 हम 있습니다. देख सकते हैं ये यीशु के जरिए बहुत ही अद्भुत तोहफा ये। 그래서 예수님도 그 떡과 잔을 기념하라고 और 이야기합니다. यीशु ने कहा कि इस रोटी और इस दाग को याद करो। 역시 오늘 우리 이 시대에 또 우리가 떡과 잔을 기념하고 있습니다. और इस दिन को हम मनाते हैं, इस रोटी और दाग को। 바로 그 떡과 바로 포도주 예수님의 피 바로 오늘 우리 안에 있습니다. और वो यीशु का जो लहू और वो रोटी वो हमारे 우리가 अंदर है। 예수님으로 말미암아 우리는 죄와 사단과 우리가 심판에서부터 정죄에서부터 이겼습니다. और यीशु के लहू के जरिए हम शाप, पाप और अंधकार को हमने हराया। 할렐루야 주님을 찬양합니다. हालेलुया, हम परमेश्वर को स्तुति करते हैं। 우리 예수님으로 말미암아 오늘 우리가 이길 수 없는 죄를 और 이겼습니다. यीशु के जरिए हमने पाप को हराया जो कभी हरा नहीं सकते। 정죄를 이겼습니다. हमने दोष भावना को हराया, 판을 हमने 이겼습니다. न्याय को हराया। 그래서 우리 영원히 온전케 되었습니다. इसलिए हम हमेशा के लिए सदा के लिए धर्मी हैं। 할렐루야. हालेलुया। 예, 그래서 우리는
바로 예수님의 그 피유월절, 예수님의 그 몸 무교절로 인해서 우리는 애굽에서 자유를 얻었던 것처럼 जैसे इजराइल लोग यीशु मसीह के लहू के जरिए और यीशु मसीह के शरीर के जरिए मिस्र देश से बाहर आए, 우리도 그렇게 자유를 얻게 되었습니다. जैसे इजराइल लोग जो है मिस्र से आजाद 자, हुए 하나님은 यीशु 이 मसीह के 모세를 लहू के 통해서 जरिए जो 네가 뭘 보고 있느냐? हे मूसा तू क्या देखता है? 모세가 보고 있는 것은 지팡이였고 मूसा ने लाठी को देखा, 까단 हाथ को 손이었고 देखा 하수였지만 और उस नदी को। 그것이 바로 너를 해칠 수 있는 사단이 될 수 있고 परमेश्वर कहता है कि वो शैतान है, वो तुम्हें हानि पहुंचा सकता है। 바로 네가 좀 깨끗하다지만 그 더러운 것이 될 수 있고 तुम कहते हो कि वो साफ है लेकिन वो गंदा है। 생소라고 하지만 그게 정말 사망이 되어질 수 있다라는 것입니다. तुम कहते हो कि पानी है लेकिन ये मौत है। Death. 내 생각을 따른다면 अगर हम अपने सोच के पीछे चले, 오름을 अगर 붙잡는다면 अपने खुद के सही सोच के पीछे 내가 चले, 잘했다고 생각하고 अगर 있다면 मैं सोचता हूँ कि मैं अच्छा करता हूँ, 바로 그렇게 될 수 있다는 तो 것입니다. फिर आप ऐसे हो सकते हो। 그래서 우리는 나 자신의 내 방법을 버려야 하는 것입니다. इसलिए हमें अपने रास्ते को, मार्ग को फेंकना है। 자, 성경에는 이러한 이야기들이 많이 나옵니다. और बाइबल में से बहुत सारी कहानियां हैं। 아까 첫 서두에 이야기했던 것처럼요. जैसे मैंने शुरुआत में कहा था, 이스라엘 백성들이 저 12명의 족장들이 가나안 땅을 탐지하고 돌아왔을 때 जब 12 भेदिए जो कनान देश में भेद लगाने गए और वापस जब लौटे, 예, 그 여호수아와 갈렙은 젖과 꿀이 흐르는 땅이다라고 했습니다. और जोशुआ और कालिब ने कहा कि ये जमीन जो है, भूमि जो है, दूध और 그리고 दाख से भरा 그들은 हुआ 우리의 है। 밥이다라고 했습니다. लेकिन वो कहते हैं कि वो हमारा खाना है। 하나님 우리에게 아브라함에게 주신 약속에 우리 가면 된다라고 이야기했습니다. हमसे उस वादे के पीछे चलना है जो परमेश्वर ने अब्राहम को दिया। 나머지 10명의 정당군들은 लेकिन दूसरे बाजू में वो 10 아, भेदिए, 우리는 절대 안 된다. नहीं, वो कहते हैं कि हम कभी नहीं जा सकते। 아, 그 땅은 적박한 땅이야. 고민을 삼키는 땅. ये उपज भूमि है और ये सिर्फ निर्जल भूमि है। 우리 절대 우리는 이길 수가 없. 우리는 그들 보게 되면 뚝이야. हाँ, उनके लिए हम एक टिड्डियों के समान हैं। 자, 여러분 똑같이 보는데 ये दोनों भी एक ही 왜 चीज 이렇게 देख रहे हैं, 다릅니까? लेकिन फिर भी ये दोनों अलग कैसे है? 여러분 성경은 이런 이야기들이 너무 많습니다. और बाइबल में से बहुत सारी कहानियां हैं। 여러분 그 다윗 시대에 그 팔레스타인의 바로 블레셋에서 키가 큰 3m가 되는 골리앗이라는 장군이 있었습니다. और दाऊद के समय एक व्यक्ति था जिसका नाम था गोलायत था, जो बहुत लंबा था और 그래서 ढील 그 डौल का था। 골리앗이 나타나니까 온 이스라엘과 사울 왕이 막 겁에 질려 가지고 두려워했습니다. जब गोलायत आया तो सारे लोग उसको देखकर बहुत भयभीत हुए, डर गए। 예, 거기 성경 사무엘상 17장 11절을 찾아보겠습니다. आइए हम देखते हैं पहले शमूएल का 17 अध्याय का 11 वचन। 사울과 온 이스라엘이 블레셋 사람의 이 말을 듣고 놀라 크게 두려워하니라. उस पलिश्तियों को इन बातों को सुनकर शाऊल और समस्त इज़राइल का मन कच्चा हो गया और वे अत्यंत डर गए। 예, 막 골리앗이 막 워낙 큰 장수니까 막 और गोलायत बहुत बड़ा लंबा व्यक्ति और ढील डौल का था 크게 두려워했다고 했습니다. और लोग अत्यंत डर गए उससे 놀랬다고 이야기합니다. और वे बहुत ही निराश हुए। 그다음 24절에도 보면은 24 वचन में 이스라엘 모든 사람이 그 사람을 보고 심히 두려워하여 그 앞에서 도망하며 했습니다. उस पुरुष को देखकर सब इज़राइल अत्यंत भय खाकर उसके सामने से 아, भागे। 그리고 사울 왕도 다윗에게 이렇게 이야기합니다. और राजा शाऊल ने भी दाऊद से कहा, 네가 가서 33절입니다. 네가 가서 저 블레셋 사람과 싸우기에 능치 못하리니 너는 소년이여 그는 어려서부터 용사니라. 33 वचन, शाऊल ने दाऊद से कहा कि तू जाकर उन पलिश्तियों के लिए युद्ध नहीं कर सके क्योंकि तू लड़का है और वो लड़कपन से योद्धा है। 예, 골리앗을 봤을 जब 때 उन्होंने गोलायत को देखा 어느 누구도 골리앗을 이길 만한 장수는 아무도 없었습니다. और इज़राइल में कोई योद्धा नहीं था कि गोलायत को हराए। 그러나 아버지의 심부름으로 형들의 면회를 갔던 이 다윗이 लेकिन दाऊद जो अपने भाइयों को देखा था क्योंकि उसके पिता ने उसको भेजा था, उसने गोलायत को देखा। 사실은 하나님을 욕을 하고 이 이스라엘의 군대를 욕을 하는 걸 봤습니다. उसने देखा कि कैसे वो परमेश्वर और इज़राइल के लोगों के प्रति वो दोष लगा रहा था वो। 그래서 이 다윗은 참을 수가 और 없었습니다. दाऊद सहन नहीं कर सका था। 그래서 이 다윗은 자기가 나가서 골리앗을 무찌르겠다 했습니다. दाऊद ने कहा कि वो जाएगा और इस 사울 왕과 이스라엘 온 고 이스라엘은 지타이가. 크게 놀라 두려워서 벌벌벌 떨고 있는데 और सारे इज़राइल के लोग और शौल वो डर गए थे।
모세는 그렇지 않다. 우리 이길 수 있다라고 이야기하고. 자, 다윗은 이길 수 있다라고 लेकिन 이야기했어요. दाऊद ने कहता कि नहीं, हम जाके उसके ऊपर मात कर सकते हैं। 그는 이렇게 36절에 이렇게 고백합니다. 36 वचन में लिखा है कि 주의 종이 사자와 곰도 쳤은즉 사시는 하나님의 군대를 모욕한 이 할례 없는 블레셋 사람이리까 그가 그 짐승 하나와 같이 되리이다라고 했습니다. तेरे दास ने सिंह और भालू दोनों को मारा और ये खतना हरित पलिश्ती उनके सामने हो जाएगा और क्योंकि उसके 37절에 जीवित 또 가로되 परमेश्वर 여호와께서 की 나를 सेना 사자의 को 발톱과 ललकारा 곰의 है। 발톱에서 건져내셨으니 나를 이 블레셋 사람의 손에서도 건져내시리이다. 37 वचन फिर दाऊद ने कहा कि यहोवा जिसने मुझे सिंह और भालू दोनों के पंजे से 아멘. आमेन। 자, 여러분, 이 사울 왕과 이스라엘의 온 사람들은 골리앗을 인하여 두려워했지만 King राजा शौल और गोलैत के वजह से सारे इजराइल के लोग भी उससे डर गए थे, 그러나 다윗은 다른 눈을 가지고 있었습니다. लेकिन दाऊद की नजर अलग थी। 하나님의 어떤 눈으로 보느냐, इसलिए किसकी नजर से आप देखते हो, 하나님 어떤 마음으로 보느냐. कौन से परमेश्वर के मन से आप देखते हो। 예, 다윗이 보는 건 달랐습니다. जो दाऊद ने देखा था वो अलग था। 사람들은 키가 크고 막 싸움 잘할 것 같던 골리앗만 쳐다봤지요. लोगों ने सिर्फ उस गोलायत को देखा जो ऊंचा था और ढील ढोल का था। 이스라엘의 정탐꾼들이 그 가나안 땅 자기 눈으로 봤지요. इजराइल के भेदियों ने अपने नजरों से 모세가 자기 눈으로 지팡이를 보고 कनान 모세가 देश को 자기 देखा। 눈으로 손을 보고 자기 눈으로 여러분 하숫가를 봤습니다. और मूसा ने उस लाठी को देखा और अपने हाथों को देखा और 예, नील नदी को 하인들은 देखा 자기가 물을 떠온 것만 생각하고 있었습니다. और नौकरों ने सिर्फ उस दृश्य को उन्होंने याद किया जो 하나님 उन्होंने पानी 어떻게 से भर दिया था। 보시는지. 하나님이 어떻게 말씀하시는지. परमेश्वर कैसे देखता है, 예수님 뭐라고 이야기 말씀하시는지 यीशु ने क्या कहा, 거기에 대해서는 알지 못했습니다. वे उनके बारे में जानते नहीं थे। 똑같은 골리앗을 보고도 वही गोलायत को देखते हुए 이렇게 보는 눈이 다를 수 있습니까? कैसे वो कुछ अलग कैसे देख सकते 가나안 हैं, 땅을 보고도 이렇게 다를 수가 있습니까? और कनान देश को बहुत अजीब अलग तौर से कैसे देख 그래서 सकते हो। 여호수아와 갈렙이 백성들 앞에 이야기를 하니까요. जब यहोशू और कालेब ने लोगों के सामने बात 돌을 कही 들어가지고 갈렙과 여호수아를 때려 죽이려고 했어요. और पत्थर लेकर लोग जो है यहोशू और कालेब को मार डालना 왜요? चाहते थे, 자기들이 볼 때 너무 맞지 않기 때문입니다. क्योंकि उनके नजरों में वो ठीक 저 नहीं दिखता। 여호수아 갈렙이 거짓말한다고 얘기했습니다. उनको लगा कि यहोशू और कालेब झूठ 맞습니다. बोल रहे हैं। 거짓말처럼 보이죠. जी हाँ, Yes. सुनने के लिए झूठ ही लगता है। 육신의 생각은 사망이라 했습니다. शरीर पे मन लगाना मौत है, मृत्यु है। 육신의 생각은 성령을 거스린다고 했습니다. शारीरिक मन आत्मा के विरोध जाता है। 육신의 생각은 하나님을 기쁘시게 할 수 없다라고 이야기했어요. शारीरिक मन परमेश्वर को खुश नहीं कर 그들은 सकता। 그렇게 봤죠. ऐसे उन्होंने देखा, 그렇기 때문에 그들은 이 골리앗에 대하여 두려워 떠는 그 눈으로 봤죠. और उन्होंने उस आंख से देखा जो जिसकी वजह से वो 예, डर गए 그리고 गोलियत 또 को देखकर। 성경에 보면은요. बाइबल को पढ़ते हुए 이 만나에 관한 이야기를 해보겠습니다. I would like to मैं आपको मन्ना के बारे में कहना चाहूंगा। 여러분 이 만나는 이스라엘 백성들이 광야에서 생활할 때 지닌 하나님 주시는 하늘의 양식이었습니다. जब इजराइल लोग जंगल में थे, परमेश्वर ने स्वर्ग से लोगों को मन्ना दिया था। 이스라엘 Wilderness. 백성들은 광야에서 농사를 지을 수 있나요? क्या जंगल में इजराइल लोग क्या खेती कर सकते थे? 물건을 살 수 있는 마켓이 있나요? क्या वहाँ पे कोई बाजार है जिसकी वजह से वहाँ से कुछ खरीद सकते थे? 예, 그들은 굶어 죽을 수밖에 없. वैसे भूखे ही मर सके थे। 그런데 하나님이 이슬이 내릴 때에 लेकिन जब ओस गिरी 만나가 같이 내렸어. और उस वक्त मन्ना आया 그리고 햇빛이 났을 때 और वो जब 그 सूर्य 이슬은 उगा 사라졌을 때 और जो ओस चली गई, 그 사라진 그 자국에 가시 같은 흰 그 무엇이 생겼습니다. और जब ओस चली गई तब एक छोटा सा जो चीज एक बीज जैसा उन्होंने दिखा दिया और जो लोगों ने उनको देखा, 그래서 사람들은 그걸 봤습니다. 처음 보는 것이었어요. ऐसा कुछ तो पहली बार उन्होंने अपने जीवन में देखा था। 출애굽기 निर्गमन 16장을 보겠습니다. 16 अध्याय निर्गमन का 만나에 관한 이야기인데요. वो मन्ना के बारे में लिखा है। 를 처음 봤을 때 뭐라고 했는지 한번 보겠습니다. देखिए उन लोग ने पहला मन्ना को देखा तो उन लोगों ने 예, कैसे देखा? 16장 16 अध्याय का 13 वचन से आगे। from verse 13. 자, 아침에는 이슬이 진 तब ऐसा 사면에 हुआ कि 있더니 सांझ को बटोर
बटेरें आकर सारी छावनी पर बैठ गई camp. 이슬이 마른 भोर 후 की छावनी के 광야 지면에 चारों 작고 ओर ओस 둥글며 पड़ी। 서리같이 세미한 것이 있는지라. और 14 वचन जब ओस सूख गई तो क्या देखा कि वह जंगल को भूमि पर छोटे छोटे बिखरे के किनको के समान 이스라엘 पड़े हैं। 자손이 보고 이것이 무엇인지 알지 못하여 이르되 이것이 무엇이냐 하니. और जब इस्राएल के बच्चों ने देखा कि एक दूसरे से कहा कि ये क्या है, 예, 모세가 그들에게 이르되 이는 여호와께서 너희에게 주어 먹게 하는 और 양식이다. वे नहीं जानते थे क्या है, तो मूसा ने कहा कि ये परमेश्वर ने स्वर्ग से तुम्हें रोटी दिया है। 자, 여기서 참 중요한 의미 하나를 말씀드리겠습니다. इसका महत्वपूर्ण अर्थ मैं आपको बताना चाहूंगा। 자, 여기에 나오는 저 뭡니까? 그 이슬이 마른 후에라는 이야기가 यहाँ 나옵니다. पे लिखा है कि जब ओस सूख गई, 그 마른 후라고 이야기하는 그 단어가 히브리 말로요. इब्रानी में ओस सूख गई इसका मतलब है 마르다라는 동사는 알라라고 되어 있고요. 마름이라는 저 명사는 올라라고 이야기를 합니다. सूख गई क्रिया में ओला कहते हैं, और फिर जो ओस जो है वो संज्ञा में ओला कहते हैं। 예, 그런데 그 올라. 예, 올라라는 뜻인데 그 올라는 번제라고 이스라엘 백성들이 하나님께 제사 드릴 때에 짐승을 갖다가 번제 드리는 그 번제를 올라라고 한다고 합니다. वे कहते हैं कि जब इजराइल लोग जब बलि अर्पण चढ़ाते परमेश्वर को, उसको भी उन लोग ओला करके पुकारते हैं। Hola. 그래서 이스라엘의 마른 후에 만나가 생긴 것처럼 और जब ओस सूख गई और जब मन्ना था वहां, 바로 이 만나는 요한복음 6장에 예수님 당신이라고 이야기하고 있습니다. योना का 6 अध्याय में यीशु ने कहा कि वो मन्ना है, 하늘에서 내린 स्वर्ग से 양식이라 उतरता 했습니다. आया हुआ रोटी। 바로 이 만나를 이야기하고 있는데요. इसलिए वो मन्ना के बारे में कह रहा है। 자, 이 만나가 이슬이 마른 후에 생긴 것처럼 ओस सूखने के बाद मन्ना तैयार हुआ, 햇빛이 났어. The sun rose. 그래서 햇빛이 탔어. 이슬이 사라지면 और सूरज के वजह से ओस सूख गई, और फिर And वहां पे there मन्ना came हुआ। manna. 예수님께서 2000년에 이 땅에 오셔서 और 2000 साल पहले यीशु मसीह दुनिया में आए, 인간의 죄를 다 받으시고 십자가에 피 흘려 죽으시고 उसने हमारे सारे लोगों के पापों को लेकर 3일 क्रूस पे 만에 मरे, 부활하셔서 우리를 어렵다 하시고 और 3 दिन के बाद वापस उठने के बाद उन्होंने कहा कि 그리고 हम 성천하셨어요. धर्मी हो चुके और वो स्वर्ग में उठाए 그리고 गए, 성령이 우리에게 올 수 있었습니다. और फिर पवित्र आत्मा हमारे पास आ 바로 सका 이 था। 만나가 이슬이 햇빛에 타졌을 때 사라졌을 때 생기는 것처럼 Just as इसलिए जब ओस सूख गई तभी मन्ना वो तैयार हो चुका था, 바로 만나는 예수 그리스도를 이야기합니다. और ये मन्ना यीशु मसीह के बारे में कह रहा है। 자, 그래서 사람들은 이 만나를 먹게 되었습니다. और लोग जो है मन्ना खाने के लिए आए, 자, 이 만나에 대한 이야기는 출애굽 16장이 계속 이어서 나오는데요. और निर्गमन के 16 अध्याय में मन्ना के बारे में लिखा है। 자, 이 만나는요, 이 맛이 굉장히 있었습니다. और मन्ना बहुत ही स्वादिष्ट था, 자, 그렇게 이 만나가 이제 और 있는데요. मन्ना था वहां पर। 그런데 여기 보면 여기 31절에 31 वचन 보면 में 저기 그 이름을 만나라 하였으며 इजराइल के घराने की 가시 उस 같고 희고 맛은 꿀 섞은 과자 맛 같았더라. वस्तु का नाम मन्ना रखा, और वह धनिया के समान श्वेत था। 얼마나 맛있습니까? और कितना स्वादिष्ट हो सकता है ये। 자, 그런데 여러분 이스라엘 백성들이 40년 동안 이것만 먹었어도 हालांकि इजराइलियों ने 40 साल के लिए खाए, 그들이 당뇨나 또 뭐 고지혈증이나 콜레스테롤이 많아서 그런 어떤 병이 전혀 없었다는 겁니다. उनको कुछ डायबिटीज की समस्या नहीं हुई या कोलेस्ट्रॉल की समस्या नहीं हुई, कुछ भी 자, 이 समस्या 만나 नहीं हुई। 너무 좋은 음식이었습니다. ये मन्ना बहुत ही अच्छा खाना 값없이 था, 그들은 먹었습니다. बिना किसी दाम भरे उन्होंने 광야에서 खाए, 지낸 동안 이보다 더 좋은 양식이 없었습니다. और जंगल में रहते हुए इससे बेहतर खाना नहीं हो सकता 그런데 था। 민수기 21장에 보니까요. लेकिन गिनती के 21 अध्याय 이스라엘 में 백성들이 막 하나님을 원망할 때 जब इजराइल लोग जो परमेश्वर के हाँ, प्रति वो 만나를 शिकायत कर रहे 이야기할 थे, 때 वे मन्ना के बारे में बात कर रहे हैं। 박한 식물을 싫어하노라. कहते हमें पसंद नहीं है बेकार रोटी। 자, 여러분 이 만나를 싫어한다고 이야기를 했는데 वे कहते कि हमें ये पसंद नहीं है बेकार रोटी। 여러분 박하 식물이라고요? क्या बेकार रोटी? 변변치 못하고 경멸스러운 뜻이 박하다는 뜻인데요. बेकार मतलब उन्होंने उसको तुच्छ 자, माना। 여러분 어떻게 이 만나가 박한 식물이 되었습니까? कैसे मन्ना एक बेकार रोटी बन 너무나도 गया? 광야에 있어서 좋은 양식이었죠. जंगल में तो बहुत अच्छा खाना था वो, 그들은 어떤 눈으로 보느냐에 따라서 और कौन से नजर से लोग ने देखा उसके ऊपर निर्भर होकर वो बेकार रोटी 이 बना, 양식이 있습니다. या कि ये जीवन को रोटी बन सकता 만나는 है। 바로 예수 그리스도를 가리키고 있습니다.
मन्ना यीशु मसीह के लिए दर्शाता 바로 है। 예수님도 2000년 전에 이 땅에 오셨을 때 जब 2000 साल पहले यीशु मसीह दुनिया में आए, 창조주십니다. वो निर्माण कारक है, 그는 정말 만왕의 वो 왕이십니다. राजाओं का राजा है, 그는 하나님이십니다. वो प्रभु है, 왕이시고요. वो राजा है, 만유의 주이십니다. वो सारी बातों का प्रभु है। 근데 그들 어떻게 봤습니까? लेकिन लोगों ने उसको कैसा देखा? 예수님을 뭐라 하겠습니까? उन्होंने यीशु को क्या पुकारा? 세리와 죄인의 친구라고 했고요. हाँ, वो चुंगी वसूल करने वाले का पापियों का वो दोस्त है। 묻기만 탐하고 술을 즐기는 사람이에요. वो कहते हैं कि वो शराब पीना उसको पसंद है। 예수님 주변에 있는 사람, 배운 사람이 있느냐? यीशु के इर्द गिर्द कोई था कि जो पढ़ा लिखा था? Hated. 나사렛 예수라 했죠. वो यीशु मसीह, नाजरी यीशु मसीह है। 그분 어떤 분입니까? वो नाजरी यीशु कौन है? 성막도 그렇죠. और मिलाप तंबू से भी वही 구약의 है। 성막에 보면 पुराने करार में मिलाप तंबू है, 불가합니다. सिर्फ एक तंबू है, 가치가 없어 보입니다. दिखने के लिए बेकार है। 그러나 लेकिन 그 성막 안에 성소 안에 अगर आप 들어가면 और सबसे पवित्र स्थान में जाते हैं मिलाप तंबू में, 여정을 금으로 만든 등대가 있습니다. वहां पे एक दीवट बना है, सोने से 등대 बना है, 하나만 하더라도 한 달란트 34kg입니다. और एक तोला सोना 34 किलोग्राम है। 여러분 요즘 시세로 그 가격을 따져보니까 그 금등대 하나만 해도 200만 달러입니다. US 달러로요. और आज के जो बाजारी मूल्य को हम देखते कि वो 20 लाख यूएस डॉलर में है। 예, 그리고 그 금 안에 있는 금만 하더라도 계산해 보니까요. 자가마치 6천만 달러였습니다. मिलाप तंबू के अंदर सारे सोने को अगर उन लोग ने गिने तो 5 करोड़ 예, डॉलर के। 겉으로 볼 때는 천막처럼 보이지만 बाहरी रूप से दिखने के लिए सिर्फ एक तंबू दिखाई देता है, 어마어마한 놀라운 가치가 लेकिन उसका 있습니다. बहुत It has a भयानक tremendous मूल्य है। value. 바로 성경에서 그런 이야기를 और ये बाइबल हमसे कहता है, 이사야 53장 2절에 보면은 यशाया का 53 अध्याय को 2 वचन में, 그래서 이야기를 이렇게 하고 और 있습니다. यहाँ पे यीशु के बारे में से कहा है। 자, 이사야 53장 2절에 보면요. यशाया का 53 अध्याय का 2 वचन में, 그는 주 앞에 살아기를 연한 숨같고 마른 땅에 나온 줄기가 고 모양도 없고 풍채도 없고 우리 보기에 본만한 아름다운 것이 없도다 했습니다. यशाया का 53 अध्याय का 2 वचन में, क्योंकि वो उसके सामने अंकुर के समान और ऐसे जड़ के समान उगा जो निर्बल भूमि से, Dire 그리고 him. 그는 멸시를 받았다 했습니다. और वो तुच्छ माना गया है 사람에게 실어버린 바 되었다. और मनुष्य का त्यागा हुआ है। 왜 वो 그렇습니까? क्या है? 사람들은 예수님을 볼 만한 눈이 없었습니다. उनके पास यीशु को देखने के लिए आंखें नहीं थी, 자기 눈으로 봤기 때문에. उनकी आंखों से देखा उन्होंने यीशु को। 그래서 여러분 어떤 눈으로 보느냐에 따라서 इसलिए कौन से नजर से आप देखते हो उसके ऊपर निर्भर होकर 생명의 주님 되시고 यीशु प्रभु हो सकता है जीवन का, 어떤 사람에게는 가치가 없는 것이 되고. या कि वो बेकारी हो सकता है। 예, 그래서 여러분들이 여러분 눈으로 보지 마시고 मैं आशा करता हूँ कि आप आपकी नज़र से मत देखिएगा। 하나님 보시는 눈으로 여러분. मैं आशा करता हूँ कि आप अपने आप को परमेश्वर की नज़र से देखो। 예, 오늘 말씀을 믿음의 삶의 말씀을 여기까지 드리도록 하겠습니다. तो आज मैं जो है विश्वास के जीवन के ऊपर मैंने शब्द को Yeah. 그래서 कहा, 여러분들이 더 이상 여러분 눈으로 보지 तो 마시고 आप अपने आप को अपनी नज़र से मत देखिएगा। 주님의 눈으로 보시게 되기를 바랍니다. मैं आशा करता हूँ कि आप परमेश्वर की नज़र से अपने आप को देखो। 예, 감사합니다. मैं अगली बार आपसे मिलूंगा। 감사합니다. धन्यवाद। Thank you.